Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This video is in English as well as in Urdu language. ये वीडियो इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है. आप डिस्क्रिप्शंस पढ़िए. काइंडली रीड द डिस्क्रिप्शंस गिवन बिलो. इट विल बी अपडेटेड इंशाल्लाह वेरी सून. आप वीडियोस मेरे समझिए, सोचिए और देखिए. Try to understand my videos. I want to tell you that this world is full of hypocrite people, ignorant people and irreligious people and unbelievers, but they are very much emotional in the matter of religions. They want to take their own decision without the knowledge of the particular subject. They think that by keeping beard, by keeping the religious looks, they think that they are very much perfect Muslim, though they are not. Either they take the decision in the guidance of or under the guidance of wrong hypocrite polytheist scholars, Islamic scholars. Generally Muslims are aggressive in this matter. They take their own decisions. In India, people are not authorized to take the decision and do the act from their own, because they are put under the supervision of the law and order. So if they come and quarrel and try to misbehave, take help of the police, call police and hand over them. Because I never created nuisance, alhamdulillah, but I always went against the evil things. That's why so many cases upon me. But I respect police, I respect law and order, I respect peace, I follow peace, I preach peace. I respect every person, every government person, because they are serving the mankind somehow. But most of them are corrupted also. Okay, but people are also corrupted in their own ways. People are also wrong. So the entire society is wrong. I have to completely change it through the holy laws only, and it is possible through the people help. So सारे लोग आजकल जाहिल बने हुए हैं, उनको नॉलेज नहीं होती और वो अपना ही डिसीजन लेना चाहते हैं. जनरली मुस्लिम्स बहुत एग्रेसिव हैं, लड़ाकू लोग हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इनके अंदर जो उलमा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लड़ाकू नहीं हैं. वो अच्छे लोग हैं, वो समझ रखते हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है. वो करते क्या है, गुमराह लोगों को जो है ना, गुमराह लोगों को और गुमराह कर देते हैं. तो अपने आप को दाढ़ी रख लिए, कोई झिब्बा पहन लिए, इस्लाम में आ गए तो समझते हैं कि पक्के मुसलमान हैं. हालांकि नॉलेज नहीं होती और अपना ही फैसला अपने आप से करने जाते हैं, अपने आप को आलिम मुफ्ती समझते हैं. इतना बड़ा सब्जेक्ट है मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, जो कम से कम तहकीक के लिए 8-10 घंटे लग जाते हैं, वो भी मेरी गाइडेंस के तहत. अगर आप वैसे करेंगे तो ज़िंदगी तमाम भी कम पड़ जाएगा. तो ऐसे हजरात जो है कुछ भी फैसला अगर कर रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं, लड़ाकू हैं लोग, तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं. और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है. और हदीस में भी आया है कि जब मुसलमान जो है, जब अल्लाह के रसूल ईसा मसीह के खिलाफ आएंगे तो अल्लाह ताला इनको जर्द कपड़ों वालों से जूते खिलाएगा. और वैसे ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. जब मेरे घर पर अटैक किया गया तो जर्द कपड़े वाले आके इनको मारे, यानी पुलिस, जो हिंदुस्तानी लोग हैं जर्द कपड़े वाले, यानी हिंदू लोग. लिहाजा हिंदू लोग बहुत चाहते हैं लॉर्ड शिवा को, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को, लेकिन लोगों को इल्म नहीं है. लिहाजा मुसलमानों को चाहिए सब्र करके तहकीक करे. देखो अल्लाह ताला के निशानात पूरे हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह के वादे पूरे हो रहे हैं. आपको जल्दी नहीं करना चाहिए, इसमें सब्र से काम लेकर तहकीक के साथ, अदब के साथ इनकार करो या इकरार करो. कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ला इकराह फी दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है. लिहाजा जो ईमान वाला होगा वो इकरार कर लेगा. द पीपल हु आर very much religious in Islam, among Muslims also, they are having good knowledge also, they can research if they are given chance. They don't encourage terrorism, they don't encourage quarrels, but such people are trying to set back and they don't want to take any decision in their own hands, because they should invite the scholars of Islam and sit together and find out the truth. Then only you will come to know. See, this is the matter very much, good news to the world, that all the promises of Allah are being fulfilled, mashallah. So one should understand this. Okay, so मेरा ये एक दावत है आप लोगों को सबको कि अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, तहकीक के साथ आप रिसर्च करिए. जाहिल मुसलमानों को, नाम के मुसलमानों को, जुमे के मुसलमानों को, इतवार के मुसलमानों को, सुबह के मुसलमान, शाम के काफिरों को, ऐसों को जो है ना
آپ اسلام سمجھائے نہ سمجھے گا، لیکن وہ لوگ لڑنے کے لیے آئیں گے تو سیدھا تو پولیس کو بلائیے، ہینڈ اوور کر دیجیے بدماشوں، کیونکہ لوگ لڑنے سے کیا ہوگا؟ ہاں، سچائی تو اپنی جگہ اٹل ہے ماشاءاللہ سے. ہندوستان میں اللہ تعالیٰ رکھے ہیں، سب کو جو ہے رکھے ہیں. میرے کو کوئی پرواہ نہیں، میں ہمیشہ پولیس کی عزت کیا ہوں. میں جہاں پہ برائی ہوئی میں اس کے خلاف کام کیا ہوں. بس میں ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کی عزت کرتا ہوں، پیس پریچ کر رہا ہوں، اور پیسفل میں خود ہوں، اور میں خود جو ہے نا لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہوں ماشاءاللہ سے. لہٰذا میں صرف برائی کے خلاف لڑتا ہوں، اور میرا ہاتھ میں بھی بعض لڑائیاں نہیں ہیں. جب تک کہ میری پوری قوم تصدیق نہ کر لے، جب تک میرا کنگڈم فارم نہ ہو جائے دنیا میں لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. لا اینڈ آرڈر خود ایک لڑائی ہے، جھوٹ اور سچ کے خلاف لڑائی ہے. اس کے کورٹ ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، سب کچھ وہی ہوگا وہاں پر انشاءاللہ. شریعت کے حساب سے کام ہوگا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے دعوت ہے، آپ لوگوں کو دعوت ہے تحقیق کی، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، اللہ کے واسطے. کیا اللہ کے واسطے کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہر کام مسلمان کا، مومن کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لہٰذا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی تحقیق، اقرار یا انکار بھی اللہ کے لیے ہو تو تحقیق کے ساتھ ہو. کیوں میرے بھائیو، اے مسلمان بھائیو، پلیز آئی اپریشیٹ آل مسلمس ٹو کم فارورڈ with discipline, with peace, and to find out the truths. Whatever I am giving are based upon Hadith and Quran. So kindly do not encourage quarrelsome, do not encourage terrorism, do not encourage fights. Let the things be settled peacefully worldwide.